Hello dear aspirants, let me welcome you to this video where we are going to discuss what are the top law entrance examinations that you can appear for after your class 12th examination. First of all, let me welcome you with a warm good morning, good afternoon or good evening on the basis of when you will be watching this video. Now in this session, in this video, we will be discussing about all the law entrance examinations. Let me first introduce myself very quickly. My name is Weber Prakash. I'm a National Law University Ranchi alumnus and I graduated in 2016. Since then, I have been training students for various law entrance examinations, and till now, I have trained more than 2,000 plus students for getting into their dream colleges. And in today's session, we are going to discuss what are the various top law entrance examinations. And the number one entrance examination that comes is Common Law Admission Test, which is also called as CLAT. Now, CLAT is very similar to what you understand with respect to IITs and IIMs. Uh, how you have IITs for engineering and IIMs for management, you have national law universities spread across entire India for law aspirants and law students. So all in all, there are 22 national law universities which are spread across the entire country, which accepts CLAT score. So CLAT Consortium is a body which conducts this examination for all these 22 universities, which are called as national law universities. Now, these are spread across the entire country, starting from NLS Bangalore, which is also, by the way, called as the Harvard of the East. So it's like that good a college and one of the dream colleges for almost every law aspirants. So you have National Law School Bangalore, you have a NALSA Hyderabad, you have a NUJS in Calcutta, you have a NLIU in Bhopal, then you have a National Law University in Jodhpur, Gandhinagar, you have in Raipur, you have in Lucknow, Patiala, you have in Odisha, you have one in Mumbai, you have in Ranchi, Kochi, you have in Patna, Guwahati, Vizag, Tiruchirappalli, Nagpur, Aurangabad, Shimla, Jabalpur, and Haryana. These last ones are a little newer ones, right from Vizag onwards are relatively newer national law universities. Apart from that, all these other national law universities have completed almost 1 decade or even more than 1 decade for that matter. Now, these are some really good national law universities that students, aim forward to. Uh, all in all, if you look at the number of aspirants or the number of students that take this examination, it would be somewhere around 60,000 across India that appear for undergraduate course. Now, when you go for when we talk about 12th standard के बाद लिखने का, जब कि हम 12th standard के बाद हम लिख रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप वहाँ पे डुअल डिग्री के लिए जाते हो. So you get one, your graduation degree, and second, you get your law degree, which is your professional degree. So you get a graduation like BA, BBA, BSc, BCom, BTech, anything along with your law degree. Always remember, don't go after what degree you are getting as your graduation degree. Always look for a better brand college, because National Law School Bangalore, which is the top law school of the country, does not offer anything apart from BALB. But those students who go to Bangalore are the cream of the crowd, and they get all the placements, or they excel in life very well. So it does not matter whether you do a BA or a BCom or a BBA. What matters is which college do you go to, because the student community is something which matters the most. So CLAT entrance examination जो है वो all these 22 national law universities के लिए applicable है. There are a few private colleges जो कि CLAT के स्कोर को accept करते हैं. तो कुछ अच्छे private colleges like Nirma University, NMIMS, UPS और कई सारे private colleges हैं जो CLAT के स्कोर को accept करते हैं. So CLAT जो है वो एक बहुत ही और सबसे important entrance examination है आपके लिए. सेकेंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे आते हैं, जो कि 23rd नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, एंड अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री इज एलेट. एलेट जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है, जो कि अगेन काफ़ी टाइम हो चुका है उससे इस्टेब्लिश हुए, एंड एक काफ़ी प्रेस्टिजियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है. नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे थोड़े कम है, so the competition becomes very difficult, the competition becomes tough, but the advantage of NLU Delhi is that NLU Delhi is situated in the legal capital of our country. So Delhi में you have Supreme Court, you have High Court and all the other lower district sessions court जो है वो एक बहुत ही छोटे से capital city में है, हमारा legal capital जो कि है.
तो द एक्सपोजर, द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, इंटरैक्टिंग विद लॉयर्स, interacting with judges, all of that becomes very very easy. It's a completely residential university, जहाँ पे कि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती है along with the same fact. आप अगर बाकी नेशनल यूनिवर्सिटीज को भी देखोगे तो वो सारे यूनिवर्सिटीज भी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज होती है. तो आपको एक हॉस्टल लाइफ, एक कॉलेज लाइफ, एकेडमिक हॉस्टल लाइफ आपको यहाँ पे मिलता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट. ऑलराइट, उसके बाद आते हैं थर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि है जिसको कि हम कहते हैं स्लैट, विच इज सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट. सिम्बायोसिस के 4 मेजर कैंपसेस हैं जिनके लिए कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है. स्लैट एक ऐसा एंट्रेंस है जहां पे कि सिर्फ आपका एग्जाम में स्कोर नहीं मैटर करता, बट आपको उसके बाद 2 और राउंड्स ऑफ टेस्ट देने पड़ते हैं, जो जिसको कि कहते हैं रिटन असेसमेंट है, जहाँ पे कि आपको एक ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे कि आप एक इंटरव्यूइंग पैनल के सामने बैठ के अपने पर्सनालिटी को शो करते हो. तो ये एक लौता ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कि 3 लेवल ऑफ स्क्रूटनी जो है वो होती है. स्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जो बेस्ट कॉलेज है सिम्बायोसिस का, वो पुणे कैंपस है. सो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, SLS पुणे जिसको कहते हैं. सो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस है सिम्बायोसिस के अम्ब्रेला के अंडर. Then you have a Noida campus, then you have a Hyderabad campus, and then you also have a Nagpur campus. तो ये 4 हैं, Symbiosis Pune, Symbiosis Noida, Symbiosis Hyderabad, and Symbiosis Nagpur. तो ये चारों campuses के लिए Symbiosis एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराता है, जिसको कि कहते हैं स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट. आपको चारों यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती. जब आप फॉर्म भरते हो तो आप अपना प्रेफरेंसेस दे देते हो कि आप किस किस यूनिवर्सिटी या किस कैंपसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो अगर आप सिर्फ पुणे के लिए करना चाहते हो या आप चारों के लिए करना चाहते हो, तो आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप उनमें अपने मनपसंद कैंपसेस को सिलेक्ट कर सकते हो. जैसा कि मैंने बोला, स्लैट में 2 राउंड का स्क्रूटनी और होती है. लाइक आपको एक रिटन असेसमेंट टेस्ट, ऐसे राइटिंग का भी टेस्ट होता है, और उसके बाद आपके लिए एक और एक पर्सनल इंटरव्यू भी आती है, जहाँ पे कि यू विल हैव टू अपीयर बिफोर अ इंटरव्यूइंग अथॉरिटी, लाइक इंटरव्यूइंग पैनल, एंड उनके सामने आपको अपने पर्सनालिटी शोकेस करना पड़ता है, एंड ऑन दैट बेसिस यू आर सिलेक्टेड टू सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी. लेकिन अगर हम इसी सेम चीज़ की बात करें विद रेस्पेक्ट टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, और मे बी फॉर दैट मैटर क्लैट, तो यहाँ पे ये सब नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर जो है वो मैटर करता है. डिफरेंट एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना स्कोर आना चाहिए, उसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं व्हाट आर द मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए. एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें कि आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, लेट मी वेरी क्विकली रन यू थ्रू व्हाट अनअकैडमी हैज टू ऑफर. अनअकैडमी में बहुत ही इंटरैक्टिव क्लासेस होती है. आप एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो क्लास में, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं जो कि आप खुद भी लॉन्च कर सकते हो अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स. You have access to live classes, you have access to recorded classes, you don't miss out on anything basically, and you have an opportunity to learn from the best educators who themselves have cracked this entrance examination and have completed their law school life at these different national law universities. You get access to national mock tests as well as sectional tests. You also have access to weekly and daily tests. आपके वीकली इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कि हम ऐसे सेशंस करते रहते हैं जहाँ you get to know about your examination, what should be the strategies, you get to meet some of the toppers and interact with them, and get to know about more about the national law university's experiences by the faculties. Unacademy has to offer various batches. कई सारे batches हम offer कर रहे हैं अभी. So legal affairs is a batch which is starting from 16th of August. You can join this batch, जो कि एक पूरे साल का बैच है, जिसमें कि आप पूरे तरीके से all the subjects जो भी आपके entrance exam में पूछे जाते हैं, right from English, legal, maths, logic and GK current affairs, तो हम सभी कुछ आप उसमें पढ़ सकते हो. Then you also have a champions batch जो कि 18th August से launch हो रहा है, which is again for an entire 1 year program, जिसको कि आप join कर सकते हैं. इसमें आपको live recorded classes, mock tests, sectional tests,
monthly current affairs and GK compendium, everything you will be getting. Then you have a then we also have a 2-year comprehensive batch for people who will be writing the examination not in 2022 but in 2023, which is like 2 years from now. तो उनके लिए 2 years का प्रोग्राम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of August. सो यहाँ पे आप बहुत ही आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने को बिल्ड करते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हो when you are in standard 11, because you will have a little more time to focus upon your schools as well as your law entrance preparation. जैसा कि मैंने कहा around 60 to 70,000 students जो होते हैं वो all these like law entrance examinations लिखते हैं, तो it's a good amount of competition. You can take a Plus subscription and join these batches, and when you do, don't forget to use my referral code, which is VAI10, and you can get a straight flat 10% discount on your Plus subscription course. Like I said, we also have a live quiz feature for the students, जहाँ पे कि आप educators जो quiz लेते हैं उसमें भी आप join कर सकते हो, या फिर आप अपने friends के साथ एक quiz खुद के लिए launch कर सकते हो, क्योंकि learning through quizzing and asking questions becomes a little more fun, interactive, and easier to retain. So आप ये feature जो है वो Unacademy आपको offer करता है. आप कई सारे टेस्ट्स जो होते हैं आपको मिलते हैं जो कि ओपन फॉर एवरीवन है, जैसे कि एक एवरी वीक फ्राइडे को 4 to 5 PM होता है, जहाँ पे कि आप अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं. 60 minutes 1 hour का टेस्ट होता है, 60 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो वीकली T20 टेस्ट्स में. ये हर दिन 20 minutes 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे. इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, लीगल, जीके on the basis of Monday to Friday होता है, and this is open for everyone. So the more you practice, the better you get at the better you get at the entrance examination that you are targeting. So do avail all these features which are available at Unacademy, and if you want to subscribe to a Plus course and you want to join a particular batch where you get a structured preparation plan and strategy, don't forget to use my referral code, which is VAI10. VAI is the initials of my name, Vaibhav. The first 3 initials is VAI, and 10 is for the discount that you get. We also have Unacademy CLAT educators also conduct special classes which are very interactive in nature, where we run polls, which is kind of a quizzing which helps you to understand and answer the questions quickly and makes it more fun and competitive. If you follow me in the video description, you will find a link to my Unacademy profile. Don't forget to follow me on Unacademy app, and you will never miss a class जो कि मैं वहाँ पे लेता हूँ. And special classes for that matter are free of cost and can be attended by anyone. I also keep taking classes on YouTube, so don't forget to subscribe to the YouTube channel as well. The most important feature of special classes is that you get to download your lecture notes. तो जो भी क्लासेस आप पढ़ते हो, अटेंड करते हो, आप उसके लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, so that you can always refer to it at a later point in time. And like Unacademy has to offer, which is the biggest advantage which I feel, is that you can access it from anywhere and anytime. You can attend it live, you can attend it recorded, and if you want, you can re-watch the entire class as many times as you feel like. Alright, now we come to the fourth entrance examination, जो कि slowly and gradually काफी लोग gradually अब लिखना शुरू कर चुके हैं, which is LSAT India. Now LSAT India जो है वो law school admission test India version है. आपको एक डाउट होगा कि LSAT एग्जामिनेशन यूएस में भी होता है, बट वो यूएस के लॉ स्कूल्स के लिए होता है जो कि आप अभी एलिजिबल नहीं होने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको ग्रेजुएशन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए अगर आपको लॉ स्कूल यूएस लॉ स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो, और उसके लिए आप LSAT यूएस देते हो. LSAT इंडिया जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, विच इज ऑफ कोर्स कंडक्टेड बाय पियर्सन ओनली, जो कि LSAT यूएस भी कंडक्ट कराती है. प्रोमिनेंट अगर हम देखें, इसमें कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती है जो कि LSAT इंडिया का स्कोर एक्सेप्ट करती है, बट अगर उसमें प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज देखें तो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल विच इज इन सोनीपत हरियाणा, दैट एक्सेप्ट्स ओनली LSAT इंडिया स्कोर्स. NMIMS Mumbai, Navi Mumbai, Bangalore, and different affiliate colleges of NMIMS accepts LSAT India score. Then you have a IFIM in Bangalore, which is also a very good upcoming law school in the country.
location advantage definitely है उसके साथ. Then you have a Vijay Bhumi University, then you have a Bennett University, and there are multiple universities, private universities, VIT and all, जो कि LSAT India का उसको accept करते हैं. ठीक है. तो LSAT India जो है वो एक और बहुत ही upcoming entrance examination है, which tests mostly your reading and reasoning skills. Apart from anything apart from that is not tested in LSAT India. Moving on to the fifth law entrance examination is a Maharashtra Law CET. Now you would have this question कि why am I talking about a state level entrance examination? तो Maharashtra Law CET जो है वो state level entrance examination लग सकता है, but gradually this has become a national level examination because of predominantly three colleges which are pretty good जो accept करते हैं Maharashtra Law CET के scores को. One is Government Law College in Mumbai, which is situated in Churchgate. सबसे prominent है, has the richest heritage and history with respect to all the lawyers that it has given, right from Nani Palkiwala to Fali Nariman to Ram Jethmalani to all the big shot lawyers that you might have heard about. Even Pratibha Devi Singh Patil, who was the first women president, is a graduate of Government Law College Mumbai. So all these, the heritage that this college has to offer, and the alumni base is so strong of GLC Mumbai that it is one of the most aspirational colleges for almost every law entrance aspirant. Then you also have a ILS Law College, which is situated in Pune, which is also a very very good college, which is aspirational. And then you also have another college called as Praveen Gandhi College of Law, which is again in Mumbai. So these are three very very good colleges under Maharashtra Law CET, which students from across India try to get into, because Mumbai, being the financial capital, has a lot to offer for to law students as well. Now let us quickly look at certain other law entrance examinations जो कि आप दे सकते हो. इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली बेस्ड है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज. इसके अंडर इनका कैंपस सेंटर भी अवेलेबल होता है. और एक कॉलेज है विप्स, विच इज विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज. These are two very very good colleges under IP University. Then you have a exam called as BLAT, which is for BHU, BHU Law Admission Test. BHU ने भी 5-year law entrance, like 5-year course launch किया था, काफ़ी टाइम हो गया उसे, and it is doing pretty good. So आप BLAT examination बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के लिए लिख सकते हो. Then you have a जामिया मिलिया इस्लामिया entrance test, जो कि again 5-year law entrance के लिए होता है. Again locational advantage यहाँ पे दिल्ली का है, तो आप आप लीगल कैपिटल ऑफ इंडिया में रह के आपके पास बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज, वेरिड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी. Then you have a NLAT, which is NMIMS Law Admission Test. NMIMS अपना भी एक entrance examination कराता है for all its affiliate campuses. तो आप एंड NMIMS का मुंबई कैंपस जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा sought after कॉलेज है. Then you also have a ULSAT, which is for UPES in Dehradun. Though UPES also accepts CLAT score, LSAT India score, but UPES also has its own entrance examination जिसके लिए आप appear कर सकते हो, which will allow you to get a seat at UPES Dehradun, जिसने कि legal fraternity में एक काफ़ी अच्छा decent अपना नाम create किया है. So with this, I think we have discussed 10 major law entrance examination that a student after 10th can write. On this note, I would like to end the session and would request you to follow Unacademy Law on YouTube. Don't forget to subscribe to Unacademy Law. Do leave your comments in the video, on the video, and like and share this video with your friends and anyone you feel would help you or would be of help. And also don't forget to join Unacademy Law Telegram channel, where not just I, but other educators also keep posting about the classes that they are taking either on YouTube or special classes, so that you can attend the classes and gain something out of it. So don't forget to subscribe to Unacademy Law Telegram channel as well. On this note, I would like to thank you so much. We will have such other videos with respect to eligibility criteria, preparational strategies, and so on and so forth. But till then, thank you so much for watching this video. This is Vaibhav Prakash signing off. Don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye and take care.